Now we will Good start morning, from ma'am. here. Then and now the story can be defined. It is a narrative of events arranged in their time sequence. Okay. Now the author is telling about sequence. Because of sequence is very necessary to make a story. If you don't know what is sequence, then what will happen with you? You know it's very well. Just as the first examination will be taken in the last time, and the last examination will be taken at the first time, then what will be happen? It means nothing will be according to the syllabus, and nothing will be according to the time. So time duration, I want to say that time duration is very must in a story and in each and every part of our life. Okay, just as we start something, just as we first of all read in nursery class, then pray, then first, then second, and there is the sequence is very necessary. Because of, if we will not do work according to the sequence, then we cannot do work exactly. So in the same manner, sequence is very necessary to make a story. First of all, they described in story time sequence. This is also very important part of the story. Just as the childhood, after it adolescence, and after it young age, and after it old age. It means this one is the time sequence. Okay. Then next thing we will start dinner coming after breakfast. Okay. Can we eat dinner before the breakfast? No, not at all. It means dinner time is exactly after the breakfast. So breakfast come to us, it means we eat breakfast first of all, and after it dinner. So this is the sequence which is very necessary in our life. And Tuesday coming after Monday. Okay. And decay after death, and so on. So all the things in sequence, because of, first of all there will be 1 January, and after it 2nd, 3rd, 4th, and next. Okay. So what is it? It is very necessary to make a sequence of all things, because of without sequence we cannot do the work perfectly, and the plan also made by us to work all the things in a proper manner. If you want to do all the things in a proper manner, then what is necessary? Time sequence is very necessary. Okay. Then here is the description of Tuesday coming after Monday. If it is possible? No, impossible. First of all, there will be Monday, and after it Tuesday. In the same manner, death after decay. Decay, it means finish. Then first of all the death, and after it decay, and so on. So all the things in a system, in a manner, it means in a sequence. So story making also take a part of sequence, and it is very necessary to make a story. So now only have one merit, that of making the audience want to know what happened next. So sequence tell us what will happen next time. Okay. Then, and conversely, it can have only one fault. It means in the conversation, and the conversely, what is necessary? Just as it can have only one fault. What was the fault in it? That of making the audience not want to know what happens next. If there will be no sequence, then it will be not clear to the audience then what will be happen after some time. It means what will become next time. अगर मूवी में पहले बचपन नहीं दिखाया जाए
पहले बुढ़ापा दिखाया जाए तो फ्लैशबैक हो जाती है मूवी, और उसमें क्या किया जाता है, पहले वो आदमी सोचने लगता है अपनी लाइफ के बारे में, और पूरी स्टोरी जो है फ्लैशबैक में चलती है। इट मीन्स सारी चीजें उसके बचपन की, उसकी यूथ की और उसकी पूरी लाइफ की चीजें दिखा दी जाती हैं। और वापस जब उस स्टोरी को स्टार्ट किया जाता है तो पता चलता है कि पूरी मूवी जो है फ्लैशबैक में चल रही थी। ओके, तो यही चीज क्या है, सीक्वेंस को गड़बड़ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले सीक्वेंस का पता रहता है। अब जैसे कोई ओल्ड एज में अपनी यूथ की कहानी सुनाता है, then he will describe all the things according to the past tense. Okay? तो ये ही स्टोरी का मैनर होता है, स्टोरी को लिखने का तरीका होता है। These are the only two criticisms that can be made on the story. ये देखिए only two criticism है जो कि इस स्टोरी में होते हैं। ओके, क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज करना, कमेंट्स करना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमेंट्स दैट कैन बी मेड ऑन द स्टोरी। इट इज द लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट। It is the lowest and simplest of literary organism. So now the author is telling you about literary organism. Okay, literary organism is very necessary to arrange the things because of the lowest and simplest. Okay, it is the lowest and simplest of the literary organism, yet it is the highest factor common to all the very complicated organism known as novels. देखिए इसके अंदर क्या ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस आर द ओनली टू क्रिटिसिज्म। दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म कैन बी मेड ऑन द स्टोरी। इट इज द लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट। ओके, सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट ऑफ लिटरेरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन ऑर्गेनिज्म इट मीन्स पार्ट, स्टोरी के पार्ट जो लोएस्ट और सिंपलेस्ट है वो बताए जा रहे हैं लिटरेरी ऑर्गेनिज्म। ओके, यट इट इज द हाईएस्ट फैक्टर। अब देखिए उसके बाद हाईएस्ट फैक्टर की बात हो रही है, कॉमन टू ऑल द वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म। कॉमन ऑर्गेनिज्म से लगाकर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म तक, नोन एज नॉवेल्स। इसको नॉवेल के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब यह है जैसे कि लोएस्ट कैटेगरी में सर्वेंट मान लीजिए, एंड सिंपलेस्ट कैटेगरीज में पहले टाइम में जो लेडीज है उनके बोलने का तरीका, या फिर विलेज के अंदर कोई बहुत बड़ी फैमिली है फॉर एग्जाम्पल, देन उसमें क्या देखा जाएगा कि लोएस्ट इट मीन्स बहुत सारे सर्वेंट है। जैसे इनसाइड द हवेली है आपके पहले थी लिटरेचर में एक नॉवेल थी इनसाइड द हवेली। ओके, देन वहां पर डिस्कशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका डिस्कशन था, सबसे पहले सर्वेंट्स का डिस्कशन था। ओके, घर के जितने भी सर्वेंट्स थे उस हवेली में उनका डिस्कशन था, एंड उनके बारे में, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, उनकी सिंपलिसिटी के बारे में, उनकी ड्रेसेस के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड देयर। ओके, देन इसके बाद क्या था, and yet it is the highest factor common to all the very complicated organism. Complicated and highest factor. Highest factor में जो उनका हेड था फैमिली का, और उसके अलावा जो मतलब कि उनकी वाइफ थी और उनकी बेटी थी, मतलब इट मीन्स, और उसकी बहू थी, यानी उनकी फैमिली का पूरा जो पर्सन थे ऊपर वाले उनका डिस्कशन था। उसके अलावा क्या था, रमा मेहता की नॉवेल है ये इनसाइड द हवेली, इट इज अ वेरी गुड नॉवेल। तो इसके अंदर भी यही चीज थी, और इसके अंदर गीता मेन कैरेक्टर थी, तो उसका ही डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसको हम हाईएस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाइसा जो थी, इट मीन्स भगवती वाइसा,
जो कि मतलब महारानी का उनका प्लेस था, और वो कैसी थी, वो कि मतलब उन पर बहुत क्रिटिसाइज करती थी गीता जी पर। तो देन गीता जी से भी ज्यादा जो मेन कैरेक्टर यहाँ पर था, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, वो मतलब उनकी सासू माँ थी। ओके, तो क्या हुआ पूरी स्टोरी के अंदर, सभी लोगों को डिस्क्राइब किया गया, और उस स्टोरी के अंदर क्या था कि लोएस्ट, सिंपलेस्ट, highest factor or complicated organism, all the things has been described there in systematic manner. Okay, तो ये आपका पार्ट हो गया एक टाइम सीक्वेंस का। then when we isolate the story like this from the noveler aspects through which it moves and hold it out on forceps, wriggling and interminable the necked worm of time, it presents an appearance that is both unlovely and dull. But we have much to learn from it. Let us begin by considering it in connection with daily life. Now, here what is description I want to tell you. When we isolate the story, देखिए जब हम आइसोलेट कर देते हैं स्टोरी को, अलग थलग कर देते हैं, बिल्कुल अकेला कर देते हैं, the story like this from the noveller aspect through which it moves. जो नॉवेलर एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने ड्रामा पढ़ा है जूलियस सीजर, ओके, इन योर क्लास देयर इज जूलियस सीजर। अब हमने आपको जूलियस सीजर में सीजर के बारे में और उसके बारे में ब्रूटस के बारे में बताया। तो ब्रूटस क्या है, नॉवेलर एस्पेक्ट है, हालांकि वो सिंपल स्टोरी नहीं है, बट इस तरीके की स्टोरी है विलियम शेक्सपियर की। जूलियस सीजर इतनी इम्पोर्टेंट बुक है, वो ड्रामा है कि उसके अंदर आपको नॉवेलर एस्पेक्ट्स दिखते हैं और थ्रू विच इट मूव्स, जो कि उसी में से होकर गुजरती है पूरी स्टोरी। यानी ब्रूटस जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। जूलियस सीजर का मर्डर करने के लिए ही वॉज नॉट रेडी एट ऑल, वो जूलियस सीजर का मर्डर करने के लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उसका मर्डर किया था जूलियस सीजर का, ब्रूटस ने। दान सीजर क्या बोला था, ब्रूट इट टू यू टू, इट मीन्स ब्रूटस तुम भी इनमें शामिल हो गए। देन क्या है इसका मतलब कि ब्रूटस जो है वो ऑल्दो ही वाज नॉट सपोर्टर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स का सपोर्टर नहीं था वो ब्रूटस, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने मर्डर किया था जूलियस सीजर का। और तब जूलियस सीजर जो है उसको पता चला था कि हमारे खिलाफ इन्होंने प्लान बनाया है, और वो सीनेट हाउस में जा नहीं रहा था। उसकी वाइफ ने उसको जबरदस्ती वहां उस दिन भेजा था, और उसके बाद में जस्टिस उसके पास आके उसको कंफ्यूज कर देता है, दैट्स व्हाई ही हैज टेकन डिसीजन टू गो देयर, ओके, और उसके वहां जाकर मर्डर हो जाता है। तो दैट इज क्या है कि नॉवेलर फॉर्म, जो नॉवेलर अगर हम माने, किसी को नॉवेल पर्सन माने, तो वो ब्रूटस था। लेकिन aspects through which it moves, ये पूरी स्टोरीज के साथ चल रही थी, and hold it out on forceps, wriggling and interminable, मतलब इसकी जो forceps थी वो wriggling मतलब घर्षण होता है, वैसे wriggling का मतलब घर्षण भी होता है, और wriggling का मतलब ये भी है कि कनेक्शन। अभी अगर हम इसको एग्जैक्टली इधर ले, अगर मैं जूलियस सीजर की तरफ जाऊं तो इसका मतलब उसका भी रोल था, किसका, ब्रूटस का। यानी क्या रोल था ब्रूटस का, ब्रूटस ने उसको किल किया था, लेकिन बिल्कुल भी उसका कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर नहीं था, वो बहुत सीधा था और उसको कंफ्यूज कर दिया गया था, जेंटलमैन था वो। एंड इंटरमाइनेबल का मतलब है एक दूसरे से उनका कनेक्शन होना। एंड द नेक्ड वर्म ऑफ टाइम, इट प्रेजेंट्स एन अपीयरेंस दैट इज बोथ अनलवली एंड डल। देखिए क्या कहना चाह रहा है, द नेक्ड वर्म ऑफ टाइम, ये जो टाइम है ये क्या है, इट प्रेजेंट्स एन अपीयरेंस दैट इज बोथ अनलवली। कई बार
बहुत अनलवली चीजों को, डल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि देखिए कई मूवीज में होता है, या फिर विलियम शेक्सपियर भी अपने ड्रामाज में ट्रेजिक रिलीफ देते हैं। और उस हर बहुत ज्यादा जब हम डल और अनलवली थिंग्स को देखते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ ट्रेजिक रिलीफ होती है। 12th में भी एक पोयम है जिसके अंदर ट्रेजिक रिलीफ दिखाया गया है। तो व्हाट्स इट, ट्रेजिक रिलीफ का मतलब है जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हम देखते रहते हैं, देन हमें रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, एंड द टाइम फिक्स फॉर इट ऑल्सो। आइटम सॉन्ग्स भी दिखाए जाते हैं मूवीज में। और वाई दीज आइटम सॉन्ग्स आर नेसेसरी, क्योंकि जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, देन जो डायरेक्टर है या जो ऑथर है उसको कोई ना कोई ऐसा सीन देना पड़ता है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, बट वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम इट। लेकिन देखिए, देन अब अनलवली एंड डल पोजिशंस डिस्क्राइब टू अस, देन वी कैन कंसीडर थिंग्स, द थिंग्स कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन आवर लाइफ ऑल्सो। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है मूवी के अंदर या नॉवेल के अंदर, तो पता है उनका क्या मतलब होता है? उनका ये मतलब होता है हम उससे कुछ सीखें कि व्हाट इज द हीरो और हीरोइन इज डूइंग ऑन दैट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कि उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हीरो या हीरोइन ने क्या किया था। ठीक है। और उससे हमें मोरल लेसन लेना होगा और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। ठीक है। तो दैन ये क्या है? ये अनलवली और डल टाइम का इफेक्ट है, जो कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में के लायक हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। ओके, देन बट वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम इट। लेट अस बिगिन बाय कंसीडरिंग इट इन कनेक्शन विद डेली लाइफ। एंड लेट अस बिगिन, हम इसका कनेक्शन किससे करना चाहिए? डेली लाइफ से। ओके, वो बोल रहे हैं डेली लाइफ से इसका कनेक्शन करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ ऑलरेडी, देन you, whenever you will see the movie, the complicated situation in front of the hero and heroine, how they solve the problem, then you should also learn from it. Clear to you? Hello students, are you here and everything is clear to you? Give me answer immediately. Yes ma'am. Okay, sufficient है आपका yes ma'am बोलना. It's sufficient for me because of all the students are sitting silently and they are not capable to give answer. Daily life is also full of the time and sense. We think one event occurs after or before another. The thought is often in our minds, and much of our talk and action proceeds from that assumption. Much of our talk and action, but not all. There seems something else in life besides time, something which may conveniently be called value, something which is measured not by minutes or hours, but by intensity, so that when we look at our past, it does not stretch back evenly but piles up into a few pinnacles. And when we look at the future, it seems sometimes a war, sometimes a cloud, sometimes a sun, but never a chronological chart. Neither memory nor anticipation is much interested in father time, and all dreamers, artists and lovers are partially delivered from his tyranny. He can kill them, but he cannot secure their attention, and at the very moment of doom, when the clock collected in the tower its strength and is struck, okay, they may be looking the other way. Now it's too much for us because of I have only 2 minutes. Okay, so these things are impossible to explain, and
I want to close now 184 page. We will start tomorrow from here. Okay? Thank you. Have a nice day, all of you. You may go from here. It means from class.